नमस्ते दोस्तों। जिंदगी में हर पल हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ अपने अनुभव से सीखते हैं, कुछ दूसरे को देख के सीखते हैं। आज इस वीडियो के द्वारा हम बहुत कुछ सीखेंगे। दोस्तों, मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है और मैं पिछले 15 सालों से फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास 100 से ज़्यादा प्रमोटर से काम करने का अनुभव है। ऐसे ही एक प्रमोटर और ऐसी ही एक कंपनी के पास आज हम आए हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि ये कंपनी करती क्या है। दोस्तों, हम फार्मा इम्पैक्ट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड में आए हैं। आज हम ये जानेंगे कि ये क्या बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं दोस्तों, हम अंदर आ चुके हैं फार्मा इम्पैक्ट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के कंपाउंड में। अब हम इनके प्रमोटर से मिलेंगे और इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज देखेंगे। अब हम लोग विजिटर चेंजिंग रूम से बाहर आ गए हैं और जैसा कि आप जानते हैं फार्मा कंपनी के गाइडलाइंस के हिसाब से हमने ये कॉस्ट्यूम पहना है। आप देख सकते हैं फार्मा का लोगो भी है। अब हम मिलते हैं इनके प्रमोटर और जनरल मैनेजर से। हेलो सर। हेलो। सो वी आर हियर। Mr. Manoj Gupta is the MD of the company and Mr. Thomas the general manager. So we'll request you to take us around the factory and we want to know what you produce and how you produce. So before we move ahead, so we'll like to know what is the material that we produce, what is the finished product, and what are their uses. Actually, we are manufacturing LVP products, IV fluids. Okay, And we have 55 products now here. okay. In 100 ml, 500 ml, and 1000 ml. So as you see, this is the quarantine store. Yes. Yeah, and the raw material store we are now entering. Okay. By placing the material here, Yeah. we intimate to the quality control for testing. Okay. Then by getting the intimation from the store, those people come here and they take the samples. Okay. So for sampling, there is a separate process is there as per SOP. The sampling will be done under LAF, laminar air flow station. Okay. And separate sampling booth is there. Okay. This is dynamic pass box. Dynamic. Pass box. Dynamic pass. Pass box means to transfer the device from where we can transfer the material from one area to another area. Oh, I see. Because the sampling booth is placed in the classified area. I see. That is class C. Okay. So we can place the material here, Okay. but this is entirely closed. Okay. And we cannot open. Okay. Once it is closed, then only I can open that door. I see. That means we can avoid the contamination. The environment air in this area, it should not be reached in that area. So this process helps you in avoiding the contamination. Yes. Okay. And after some testing, Yeah. the result will verify by the quality assurance team. Okay. Then after verification, if it is approved, the material is shifted to the approved raw materials. Okay. So we are getting into the approved raw material store. Great. So this is what we are saying is the approved raw material. Yes. So after these two processes, this is the final raw material that we are going to use for the production. Yes, correct. This you can see the paracetamol IP. Okay, so paracetamol tablets that we have usually when we have fever. We are not manufacturing tablets. We are manufacturing LVP, IV fluid. That is paracetamol infusion 100 ml. Okay. Paracetamol infusion 100 ml. Okay. So LVP, what does that mean as a layman, if I can ask? Large volume parenteral. Okay, large volume. Yeah, Okay. yeah. Okay. So it's not a tablet. It's a. It's an infusion. It's an infusion. Yeah. Okay. Fine. Great. So these are all the These are all approved the raw raw material. material. Yeah. Yeah. This one is metronidazole. Sorry. You can come again. Metronidazole. Metronidazole. Yeah. Okay. Okay. And here is desmosamidaz. Okay. So basically, we can see all the raw materials that are stored here, Yeah. approved raw materials all over the place, Yeah. and these are then again used for the Manufacturing of IV fluid. IV. Yes. Okay, great. Now the material portion is completed. Okay. Now we are going for the process. Okay. So once we are planned to make a product, Okay. one batch size is decided. Okay. Then according to the batch size, one BMR will be issued. BMR. BMR. Okay. BMR means batch manufacturing record. Great. That is the first process of Okay. making a batch. Okay. By after issuing the BMR, all the environment where we want to produce that product, Okay. that we will check
for the compliance. Oh, I see. Environmental monitoring. Okay, After environmental monitoring, one chemical requisition goes to the store. I see. And the store people and quality assurance people verify that raw material. Okay, Then the material is issued to the dispensing room for dispensing. okay. We are in front of the dispensing room. We cannot enter, but we'll have a look at it. So, Yes. Thomas ji, can you please say what Yes. what we can see? As per the BMR, the material is issued in the dispensing room. Okay, Then by the quality assurance and production chemist will come inside the dispensing room okay, and weigh the material under LIF as per the master formula. okay. So, next, what is the next step then? After weighing, it is placed in a closed container Okay, and that container is moved to the preparation room okay. through dynamic pass box. So, if I can recall correctly, this is the fourth process from dispensing to the preparation room. Yes, yes. So, we are now heading towards the preparation. Preparation room. Okay, let's go. So, this is the preparation room. Yes. Okay, okay. Here the bulk material is mixed with water for injection Okay, and the entire process is controlled by PLC. okay, It is fully automated okay, and once we decided to make the batch and complete the BMR okay, and after monitoring the environmental conditions, we dispense the material. okay, Then the material which we are dispensed is fed to the manufacturing tank. okay. So, this is the manufacturing tank? Yes. Okay. And by feeding, the magnetic stirrer will start automatically. What will start? Magnetic stirrer Okay, magnet system. for Okay, homogeneous mixing. okay, okay, After mixing completion, okay, the stirrer will stop Okay. and make up the volume of the solution. okay, Then we collect the samples. okay, And after getting it approved, Okay. then the next process is filtration. okay, Product approval. Okay. We have 4 steps of filtration. okay, The initial one is 10 micron. Okay. 10 micron filtration. okay, Then 2 micron. okay. Then 0.45 micron. Okay. And final with 0.2 micron filter. So, what is the difference between these filtration? I mean, the That is, microns? we can minimize the contamination Oh. by filtering Okay, because the final filter is 0.2 micron. okay, The entire precautions we are taken to only to minimize the contamination. friends, we are now at the filling and sealing section. तो सोमन सर, इस filling and sealing section में होता क्या है? Yeah, actually this one is the most sophisticated technology in the world of filling IV fluid. Oh. This technology is called FFS. Okay. FFS means foam, fill and seal. Can you come again? Foam, fill and seal. Form, fill and seal. Yes. Okay. This is an advanced technology that we can avoid the contamination in the product Okay. because the container is formed in the same place. Okay. The filtered solution is filling and sealing. Okay. These 3 processes we can accommodate in a single place. Okay. That is also under LIF, laminar airflow worksheet. अच्छा. Okay. That filled and sealed bottle is come outside through the conveyor. Okay. Okay. So this is the product that is coming out after filling and sealing. Yeah. This is semi-finished product. This is a semi-finished product. Yeah. Okay. This is the normal saline which you see, Yes. which is given to us. Yeah. God forbid if we are hospitalized. One Yeah. of the normal saline. That is, there are so many products are there. Okay. That So is- what is this product this is called? sodium chloride injection IP. Sodium chloride injection IP. Yes. Oh, I see. It is in 500 ml. It is in 500 ml. Okay. So these 500, this is an automated process. After the filling and sealing comes, I Yes. can see this is hot. Why this is hot? Because the temperature of the solution which we are prepared is 85 degrees Celsius. Okay, the solution is prepared at 85 degrees Yeah, centigrade. yeah. Okay. After the preparation of the solution, it is cooled up to 45 degree temperature. How that is done? That is by through process chiller. Okay. Cooling is there. Okay. Then after cooling, the solution is become 45 degrees Celsius. Okay. And we are 45 degrees Celsius temperature solution. I see. Okay. So that's why it is hot. Yes. तो अब थॉमस जी हमको ले आए हैं कुछ एक बड़ी सी मशीन के सामने. सर ये क्या है? It is a superheated water spray sterilizer. Okay, super heated water spray sterilizer. Okay. Here the process is sterilization. So after decontamination and everything is done, we need to sterilize again. Yeah. Okay. Because matlab we are prepared the solution, Right. filled the bottle, Right. and by making the stacking, Okay. we want to get it sterilized. Oh, I see.
Then for sterilization, we are using the equipment superheated water spray sterilizer. I see. Okay. The material which are filled is fed in the chamber. Okay. Then the heat up process is there. Okay. And it takes some nearly 60 minutes for reach the temperature up to 108 degrees Celsius. How many quantity pieces? That is some nearly 8,200 bottles. So 8,200 bottle can be sterilized Yes, at a time. at a time. There are 3 steps is there. Okay. The first one is heat up, Okay. then sterilization hold, Okay. and the final one is cooling. Oh. So for the heat up step, it is required some 60 minutes. Okay. Then again 60 minutes for sterilization hold, Okay. then cooling. तो दोस्तों अभी हम सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स को देखें. अब हम आ रहे हैं बहुत ही एम सेक्शन में. हम आ रहे हैं क्वारंटाइन एरिया में. चलिए अंदर. The testing is not completed. We have kept it in a separate room, Yeah. which we call the quarantine. Quarantine. Okay. So how long it is kept there, and how much time you take for testing? Actually, for testing it is required 14 days. 10 days. 14. 14 days. Yes. Okay. There are 3 type of testing is there. Okay. One is chemical, Okay. physical, Okay. and biological. Okay. The physical and chemical testing can be completed in the same day. Okay. But the biological testing it will take 14 days for the completion. Fine. Viewers, we can see that the product is ready and it is ready to sell. Now we are moving ahead to the sales department. क्या होता है? During the quarantine period, Okay. that bottles we are labeled. Okay. So labeling, for the labeling process there are so many processes there. One is the leak test, Okay. then visual examination, Okay. then capping on the bottle, Okay. then labeling. Okay. And label it is mentioned the batch number, manufacturing date, MRP or expiry date, Okay. or if any particular supply is there, that also. Okay. That all things we can get from the label. Okay. Then after labeling, floor wrapping of the bottle is there. Okay. Then put in the corrugated box and we store in the quarantine store. This also it is a quarantine store only. Okay. You can see the label Okay. and it states that the product name. Okay. That the product name is compound sodium lactate injection IP. Okay. It is in 500 ml pack. Okay. All the ingredients which is contained and the manufacturing date, expiry date, batch number, and all these things we can get from this label. By getting the order from the customers, we make a dispatch slip, and according to the dispatch slip, the dispatch in charge will make the arrangement for loading, and now the loading is going on. So दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि कैसे अपने ट्रक्स में सारे सामान वर्कर्स लोग डाल रहे हैं और ये रेडी फॉर डिस्पैच है. तो अभी तक जितना कंप्लीट प्रोसेस देखा है, फाइनल स्टेज पे हम पहुंच गए जहाँ की अब प्रोडक्ट्स इज रेडी फॉर डिस्पैच. IV फ्लूइड में जो मेजर कंपोनेंट है पानी. और तो पानी जो है अपना हमारे जो बोरवेल है, बोरवेल से पानी को पहले एक स्टोरेज टैंक में कलेक्ट किया. हाँ. तो सेडिमेंटेशन होने के बाद में जो उस पानी को हमने ऊपर एक टंकी में कलेक्ट किया. वो टंकी में से पानी हम फिल्ट्रेशन के लिए ला रहा है. तो फिल्ट्रेशन टंकी में पानी जो था उसको कलेक्ट करके फिल्ट्रेशन पे लाया. Yeah. राइट सर. Yeah. हाँ. फिर तो फर्स्ट प्रोसेस है मल्टीग्रेड फिल्ट्रेशन. हाँ. तो मल्टीग्रेड फिल्ट्रेशन में जो बोरवेल से जो पानी आ रहा है, उस पानी का अंदर जो मड या मगर जो भी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज जो रहता है, वो इम्प्यूरिटीज को यहाँ निकाल देते हैं. ओके. उस इम्प्यूरिटीज को निकालने के बाद में उसी पानी को हम सॉफ्टनिंग के लिए दिया. सॉफ्टनिंग के लिए. या राइट. तो सॉफ्टनर में उसका अंदर जो पानी के अंदर जो कैल्शियम, मैग्नीशियम या कार्बोनेट के जो हार्डनेस रहता है, राइट. उस हार्डनेस को रिमूव करता है. सो सॉफ्टनिंग के बाद उसके हार्डनेस को रिमूव किया गया. तो हार्डनेस रिमूव होने के बाद में फिर अगर हमको pH राइज करना है, Okay. डिक्लोरिनेशन करना है, Okay. अगर एंटीस्किलेंट फीड करना है, तो उसके लिए डोसिंग सिस्टम है. तो डोसिंग सिस्टम के बाद में ये हमारा प्री फिल्ट्रेशन है. तो प्री फिल्ट्रेशन होने के बाद में रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है. तो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहा है करके वी आर यूजिंग डबल आर सिस्टम. डबल आर सिस्टम. डबल आर सिस्टम है. तो उसमें क्या है, पहले जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होने के बाद में उस पानी को फिर से एक बार रिवर्स ऑस्मोसिस करता है. राइट. तो मगर डबल फिल्ट्रेशन हुआ. करेक्ट. उसके बाद में ये डी आयनाइजेशन. तो पानी का अंदर जो भी आयन्स जो रहता है, जो भी पॉजिटिव आयन्स, नेगेटिव आयन्स जो रहता है, उस आयन्स को निकाल दिया यहाँ. राइट. निकालने के बाद में जो प्योर H2O जो रहता है, जो H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट. उस H2O को हम अगेन इसको डिसइंफेक्टेंट किया यूवी रेज से.
अच्छा, तो कोई- क्या अब ये रेडी है आईवी फ्लूइड बनाने के लिए? No. अभी भी नहीं। ना। अच्छा, तो ये इसके आगे अपना- और प्रोसेस है। हाँ, प्यूरिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट Yeah. हुआ, वाटर प्यूरिफिकेशन। ओके, हमने प्यूरिफाइड वाटर को बनाया। राइट उस प्यूरिफाइड वाटर को फिर से हम डिस्टिल करना पड़ेगा राइट ताकि वाटर फॉर इंजेक्शन बनाने के लिए। राइट ये 139 डिग्री टेम्परेचर में अगेन उस पानी को वेपराइज किया राइट। और उस पानी का वेपर को हमने कलेक्ट करके उसको कंडेंस किया। अच्छा, तो कंडेंस करने के बाद में जो पानी जो बनता है वही हम WFI का जगह पे यूज़ कर सकता है। WFI WFI वाटर फॉर इंजेक्शन। ओके। सो अब हम लोग लास्ट प्रोसेस पे जा रहे हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन निकालने के लिए, Yes, जिस yes. वाटर को हम आईवी फ्लूइड में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो समझा वो है कि नॉर्मल पानी को हम लोग कैसे उसमें से कंटेमिनेशन और बाकी चीज़ हटा के उसको फ्लूइड बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए हम उसको कैसे बनाते हैं। Yes. तो वाटर फॉर इंजेक्शन, वाटर फॉर इंजेक्शन। वाटर फॉर इंजेक्शन। तो 5000 लीटर प्यूरिफाइड वाटर से ये 5 सिलेंडर से ये लास्ट कंप्लीट होके प्यूरिफाई होके ये वाटर फॉर इंजेक्शन का 5000 लीटर का टैंक है। ये मशीन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मशीन क्या चीज़ है? ये जो मशीन है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन लूप लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लूप लाइन, दिस इज द स्टोरेज टैंक ओके and this storage water we are using in the manufacturing section. ओके तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन के लिए जो पानी को ट्रांसफर करने का है राइट और उसका लूप सिस्टम बनाया हुआ है। राइट दिस इज द यूजर पॉइंट। ओके दिस आर द ये यूजर पॉइंट्स है। ओके तो ये यूजर पॉइंट में जब जरूरत पड़ता है तब पानी लेगा, ओके अगर नहीं है तो वो अगेन रिटर्न आएगा। राइट तो दिस इज द लूप सिस्टम। ग्रेट। तो दोस्तों थॉमस सर ने अभी हमें ये बताया कि जो अपने फ्लूइड के अंदर में जो पानी रहता है वो पानी जो नॉर्मल आते हैं अपने उसको यूज़ नहीं कर पाते। हाँ, प्यूरिफिकेशंस भी एक प्रोसेस नहीं है, इसका कंप्लीट प्रोसेस से इसको वाटर फॉर इंजेक्शन मतलब WFI कैसे निकालते हैं वो प्रोसेस हमने देखा। अब हम जाएंगे कंट्रोल चेक पे, क्या कैसे क्वालिटी को इन चेक करते हैं। सर ये कौन सा सेक्शन यहाँ पे क्या होता है ज़रा बताइए। ये अपना क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन है। तो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में हम जो दवाई बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो इन प्रोसेस में हमने जो देखा था मगर उसका बीच में जो टेस्टिंग्स है और फिनिश प्रोडक्ट के जो टेस्टिंग्स है ये सब यहाँ पर होता है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं मगर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है मगर यहाँ पर, और ये जो ग्लासवेयर जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें अपना जो रॉ मटेरियल हो, फिनिश प्रोडक्ट हो या सेमी फिनिश प्रोडक्ट हो, इसका टेस्टिंग किया जाता है। तो टेस्टिंग में उसका प्योरिटी हमको मालूम पड़ जाता है और उसमें अगर फॉर्मूला के हिसाब से या फार्माकोपिया के हिसाब से जो भी डिफरेंसेस है वो हम इधर आइडेंटिफाई कर सकता है। अच्छा, तो इसके लिए ट्रेंड लैब टेक्नीशियंस yes, अपने को रखना yes, पड़ता है। yes. ओके ग्रेट। ये किधर जा रहे हैं सर हम लोग? दिस इज द इंस्ट्रूमेंट रूम। Yeah. ओके, सो वी आर एंटरिंग इनटू द इंस्ट्रूमेंट रूम, इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग हो। इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग रूम प्लीज। इधर जी, आप ये अच्छा। देख रहा है तो ये जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, Okay. तो इस इंस्ट्रूमेंट का थ्रू अभी पहले जो पुराने ज़माने में जैसा टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता था, हाँ ओनली एनालिसिस में होता था, बट Okay. आजकल क्या है मगर एक्स्ट्रा प्योरिटी और करेक्ट रिजल्ट मिलने के लिए हम पूरा इंस्ट्रूमेंट में ये टेस्टिंग होता है। ओके तो इसमें क्या होता है जैसे मटेरियल के साथ में कुछ इम्प्योरिटी भी अगर रहता है हाँ तो वो भी हमको मालूम पड़ जाता है मगर इसमें ये इम्प्योरिटीज रहता है। ओके। तो आप ये मशीन देख रहे होंगे, देखिए दोस्तों ये बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड ये और है। बड़ा ही शानदार मशीन लग रहा है। इसका नाम है HPLC। HPLC है ना? सर इसके अंदर मैं कुछ देख पा रहा हूँ बॉटल्स में रखे, वो क्या है? उसमें इंजेक्शन का जो वायल्स रखा हुआ है, सैंपल्स रखा हुआ है, वो सैंपल्स फीड करके यह रिजल्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ग्राफिकली अपने को रिजल्ट्स दिख सकता है। तो ये बड़ा ही अत्याधुनिक तरीका है लैब टेस्टिंग करने का और ऐसा माना जाता है कि ईस्टर्न इंडिया में ये सबसे बेस्ट है। धन्यवाद थॉमस जी, ये सारा प्रोसेस इतना विस्तारित रूप से हमको बताने के लिए थैंक यू सो मच। पर जाने से पहले दो आखिरी सवाल, क्या आप ये बताएंगे, क्योंकि एक एज एन इन्वेस्टर फार्मा इंडस्ट्री में हम लोग ये भी जानते हैं कि देयर इज अ ह्यूज एंट्री बैरियर। क्या मैं अगर आज चाहूँ तो मैं आज फार्मा इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं बैठा सकता हूँ, भले मेरे पास कैपिटल और रिसोर्सेज, क्यों? लाइसेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अपने को कौन सा लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है और अपने पास क्या क्या लाइसेंस है, थोड़ा अगर इसके बारे में बताएंगे। अच्छा, लाइसेंसिंग के लिए अपना जो CDSC वो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट ड्रग, ये दोनों का कंबाइंड
इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन होता है फैक्ट्री में। ओके जो वेरिफिकेशन होने के बाद में दे आर इश्यूइंग लाइसेंस इश्यू करता है, तो वो फॉर्म 28D में रहता है। फॉर्म 28D या फॉर्म 28D में लाइसेंस इश्यू होता है। उस लाइसेंस में हमको प्रोडक्ट अप्रूवल सेपरेट मिलता है, ओके प्रोडक्ट अप्रूवल। ओके तो प्रोडक्ट अप्रूवल लेने के लिए हमको स्टेबिलिटी स्टडी सबमिट करना पड़ेगा। Okay. स्टेबिलिटी स्टडी सबमिट करने के बाद में प्रोडक्ट अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। ग्रेट। फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ में हमको GMP और GLP कॉम्प्लाई रखना पड़ेगा। GMP कंप्लाई क्या होता है? ये क्या वही WHO GMP कंप्लाई है? नो, दिस इज सेपरेट वन। WHO GMP is separate one Okay. and GMP is separate one. ओके तो इनिशियल वन इज GMP. It the certificate is issued from state drug, ओके वेस्ट बंगाल ड्रग। ओके वेस्ट बंगाल। एंड इसमें GMP का मतलब हुआ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ओके एंड द सेकंड वन इज GLP, ओके दैट इज गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। So there are two practices licensed: GMP, good manufacturing process; GLP, good laboratory practice. Am I correct? यस, Thank you. एंड साइमल्टेनियसली उसी के साथ में हम काम करते करते हम WHO Okay. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर कर सकता है। Okay. प्रिपेयर करने के साथ में वो लोग अगेन इंस्पेक्शन करेगा, वेरीफाई करेगा अपने फैसिलिटी को Okay. और अपने वर्क को, अपने प्रोसेस को वेरीफाई करने के बाद में if the process and the environment is in up to that level, then WHO CDSCO will issue the certificate, that is called World Health Organization WHO certificate. तो क्या अपना ये यूनिट फार्मा इम्पेक्स को WHO Yes, से अप्रूवल मिला हुआ है? Yes, we are certified by WHO and we have COPP also, certificate of pharmaceutical product. Oh, I see. Once we are getting the COPP only, we can export that product to the foreign countries. So अगर हमको एक्सपोर्ट करना है फॉरेन कंट्रीज, आई नीड WHO GMP एंड COPP. Yes. तो अब जब एक्सपोर्ट की बात आई गई है तो ये बताइए अपने कौन से बाहरवी कंट्रीज में देते हैं? Yes. We are supplying to the foreign countries like Yemen, Uzbekistan, Russia, Philippines, and we have now the registration process is going to the many countries, but because of COVID it is still not completed and the process is going on. ग्रेट। सो दोस्तों, फार्मा इम्पेक्स एक्सपोर्ट भी करती है बहुत सारी कंट्रीज में, जिनका भी आपने सुना थॉमस जी ने बताया। मैंने आपसे बोला था 2 प्रश्न पूछूंगा। लास्ट प्रश्न मेरा ये है कि अपनी ये जो पूरी कैपेसिटी देखिए, कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और अपने कितने यूटिलाइजेशन में है अभी? We have the capacity utilization of around 99%, and we have the capacity of 2 lakh bottles per day. 2 lakh bottles per day. Yeah. So you are saying that this whole setup that we have seen, दोस्तों यहाँ पे 2 लाख bottles प्रोडक्शन हो सकते हैं, वो भी पर डे। Yeah, per day. एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर। Yeah. एंड वी हैव प्रोविजंस टू एक्सपेंड इट फर्दर Yeah. इन दिस एक्जिस्टिंग प्लांट। Yes. We can expand. सो दोस्तों, 2 लाख बोतल इस फैक्ट्री से, जिसका आपने अभी शेयर किया, यहाँ से डेली मैन्युफैक्चर होते हैं और यहाँ पे इतनी प्रोविजंस है कि इसको और बढ़ा भी जा सकते हैं। थॉमस जी, आई कांट थैंक यू मोर। बिफोर आई गो टू आवर MD सर एंड हैव अ विजन एंड लिसन टू हिम, क्या वो आगे सोच रहे बिजनेस के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी के बाहर। अब थॉमस सर का चेहरा देखना बनता है। धन्यवाद थॉमस सर, एक बार फिर आप Thank you. इतना अच्छा विश्लेषण देने के लिए। Okay, thank थैंक you. यू सो मच। Thank you. चलते हैं अब हम MD सर के पास। दोस्तों, ये तो बात थी फार्मा के प्रोडक्ट की। हमने पूरा प्रोडक्शन फैसिलिटी को देखा, लेकिन एक बिजनेस के प्रोमोटर से जब तक अपने बात नहीं करती, उनके विजन और आगे क्या करने वाले हैं इसके बारे में जब तक जानकारी नहीं मिलती, तब तक जानकारी अधूरी रहती है। तो अब हमारे साथ हैं मनोज सर। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर, हमारा पहला प्रश्न आपसे है कि हमने आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी तो देख ली, लेकिन फार्मा के बारे में और थोड़ा आपसे सुनना चाहते हैं, इसलिए फार्मा के बारे में बताइए। Pharma Impex Laboratory was founded by my father Okay. 44 years back, and ever since then we have been into generic manufacturing of pharmaceutical products in various dosage forms. This is one of the dosage forms which you have seen. It is called IV fluid plant, where infusions are made. Other than that, we are also manufacturing antibiotics, sterile antibiotics and antibiotic capsules, along with dialysis fluids which are required for dialysis treatment.
सो ये एक यूनिट है, इसके अलावा 2 और यूनिट है आप जैसा बता रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आईवी फ्लूइड्स ही मैन्युफैक्चर होती है। जी। ग्रेट। तो सर ये अपने किसको सप्लाई करते हो, अपने क्लाइंटल्स कौन कौन है? See, basically these products are into critical care. We are into critical care products. So critical care essentially is required in the hospitals. Yeah. It is not required over the table counter Correct. like in pharmacy shops. Right. So these products are mostly found in institutions, that is hospitals, and our main focus is into government institutions Okay. and exports. Okay. So we are supplying to government institutions for last 44 years. So if I can ask you, what is the composition of how much we are giving it to government and how much to private? I mean, if you can say. 80% is going to the government institutions, Okay. and 20% is going to export and private institutions. So this is very important, viewers. I mean, 80% of the sales of pharma Apex is going to the government institution. So as I got the idea while I was speaking with your GM, Mr. Thomas, उनसे बात करते हुए पता चला कि यहाँ का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2 लाख बॉटल्स पर डे है। जी। तो 2 लाख बॉटल्स के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्टी इन सोर्सिंग द रॉ मटेरियल? क्या रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है या इसमें दिक्कत है? No, we are finding little bit of challenge, not little bit of challenge, lot of challenges, because one way we have 80-85% of the raw material which is coming directly or indirectly through China. Okay. On the other hand, the granules which is required to manufacture bottle, Okay. it is from crude, petroleum crude. Oh, yeah. So it's a byproduct. Okay. So because there is a huge increase in the crude prices and the shipment, Okay. as we are all aware that shipments are blocked Right. all across the globe, due to which most of the products which are coming from USA or Middle East, Right. they are getting stuck. Fine. So China is the main product. So are we not sourcing it locally? मतलब इंडिया में इसके raw materials available नहीं है। Even if we have to source it from Indian manufacturer, their key starting material or their intermediate products, Oh. Yeah. they are again sourced from China. So if there is a disruption in their key starting material or intermediate product, their finished product, that is API, is getting hampered, Right. and due to which we are getting hampered. So it's a complete chain that we are talking about. So you spoke about API. We hear a lot about API. So for our viewers, can you tell what is API and how? It's called active pharmaceutical ingredient. Okay. Basically, when we say that key infusion, in infusion, water for injection is one of the key components. However, API is again like metronidazole, how we popularly know it as Metrogel. Right. So that raw material is called API, Oh. which is going in the water for injection with other ingredients, and the formulation is prepared. So yeah, so the raw material for those APIs are basically sourced from China, and since we are seeing a disruption over there, so the complete chain has got affected. Yes. So can we know the few names, if you can say, in the private players, those who are taking products from us? Well, mostly all the AIMS institutions in India, we are supplying to them. Okay. We are also supplying to most of the, like in West Bengal, we can name few, Calcutta Hospital Okay. or AMRI. Okay. There we have distributors who are taking from us, and these distributors are supplying to the hospitals. So great. I mean, so it's been 44 years, and it's the second generation entrepreneur, if I understood it correctly. So do you have any plans for expansions, or how this idea came to you, and are you planning to go? What are you planning next, or in the next 5 to 10 years? Well, there has been a plan for biological products. Biological products. Okay. That is vaccines, Oh. which has been very close to my heart, and in fact we had to shelve because of various reasons, and there had been meltdown and also this pandemic crisis. But however, we are injectable people and biological people, so that is one thing which we are going to be coming very soon, and you will be seeing most of the vaccines like tetanus toxoid, cholera, hepatitis A, B, all these vaccines coming out from our factory very soon.
So what I understood is this a big news that Pharma Impex is now looking to manufacture vaccines. Yes. So this is the next big step. ये next सबसे बड़ा step होने वाला है फार्मा के जर्नी में कि अब वो vaccines बनाने वाले हैं. So that's a great news and my best wishes are with you. Thank you. And I am sure my viewers will also will be sending you good wishes so that you become successful and we see pharma to newer heights. Thank you. Thank you. It was wonderful speaking to you. बहुत अच्छा सर. I am thankful that आपने अपना समय दिया. और अपने वैक्सीन्स का जब मैन्युफैक्चर करेंगे, आई होप हम अपने व्यूअर्स के साथ वापस आपके फैक्ट्री में आएंगे और हम लोग वापस वो सेटअप देखना चाहेंगे. Till then, all the best and you are doing a great service to the nation. Thank you so much, sir. Thank you. दोस्तों, एक कंपनी बनाने में जितना एक प्रमोटर और उसके कस्टमर्स या वेंडर्स का हाथ होता है, उससे भी ज़्यादा योगदान उसके एम्प्लॉयज़ के रहते हैं. तो ऐसे ही हमारे साथ 2 ऐसे एम्प्लॉयज़ है फार्मा इम्पैक्स के. मैं इनसे इनका नाम और ये क्या डिपार्टमेंट हेड करते हैं और ये कब से काम कर रही है पूछते हैं. चलिए, आपका नाम बताइए, आप कौन से डिपार्टमेंट? रंजीत कुमार राय. रंजीत मैं कुमार राय. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हूँ. अच्छा. और टोटली मेरे को 22 साल हो गया है. अच्छा. ये स्टार्टिंग से मैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में से ही हूँ और हमको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है और किसी को ना किसी को हम जो काम करते हैं उसका बेनिफिट लास्ट स्टेज में उनको मिलता है. तो हम काम के साथ में ये भी हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे किसी का भला हो रहा है. कितनी ज़बरदस्त बात इन्होंने बोली है. क्या काम में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ये है कि ये जो चीज़ बना रहे हैं, जो दवाई बना रहे हैं, वो किसी ना किसी का लाइफ सेविंग में काम आ रहा है. तो ये बहुत ही बड़ा एक मेंटल और अपना खुद का एक सेटिस्फेक्शन का बात है जो कि आपने कहा. थैंक यू. अब आपका नाम और आप क्या कौन सा डिपार्टमेंट लेते हैं? मेरा नाम अरुण पासवान है. मैं यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर हूँ. अच्छा. ओवरऑल क्वालिटी देखता हूँ मैं. जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट जाता है तो आई थिंक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है बिकॉज एक बार मेरा साइन होने के बाद सीधे मार्केट में जाता है. ध्यान देने वाली बात है कि मैं ही पास करता हूँ तभी माल निकलता है. Yes. सर भले ही जितने प्रोडक्शन कर दे. तो दोस्तों, ये थी कहानी फार्मा इम्पैक्स की. मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी. जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दोस्तों, नए कंपनी और नए प्रोमोटर्स से मैं आपको ऐसे ही मिलाते रहूँगा. फार्मा इम्पैक्स एक अनोखी कहानी है. 44 साल पुरानी कंपनी आज एक सलाइन बनाती है जो कि एक क्रिटिकल केयर में माना जाता है. दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.